Our today's class is for 12th class. As you know, we are learning subject geology. Our today's topic is interior of the earth. As you know, the earth structure is divided into three parts: crust, mantle, and core. So, the geologists have divided the interior of earth into three parts, that is crust, mantle, and core. So if we take out of three, the first one, that is the crust in today's class. The crust is the topmost layer of the earth. As you know, this crust part is above the Maho discontinuity. So Maho discontinuity is a transition zone which is also a line or a border which separates the mantle from the crust or crust from the mantle. So the uppermost layer is the crust, which is separated by Mohs discontinuity. The crust part is 30 to 80 kilometers thick beneath the continents and about 10 kilometers thick beneath the oceans. As you know, the continental crust part contains slightly dense rocks, slightly less dense rocks like granite, and below the oceanic crust, this crust, or we can say the oceanic crust, is composed of rocks like basalt, diabase, and gabbro. As you know, this crust is divided into two parts or two layers. One is the upper crust and the next is the lower crust. So there is also a transition zone or a border between the upper crust and the lower crust. That border is known as conod discontinuity. So conod discontinuity separates upper crust and lower crust. It is a border between the two parts. As you know, upper crust is also known as shale, means the rocks mostly contain minerals silica and aluminum. The specific gravity of the upper crust is 2.65 and is less dense as compared to lower crust. The rocks of the upper crust are granitic in nature, whereas the rocks of the lower crust are basaltic in character. And lower crust is also known as sima, or we can say minerals of silica and magnesium are present in the rocks of lower crust. So in this way we can differentiate upper crust and lower crust. Their nature of rocks, presence of minerals, and the specific difference in specific gravity. So this is an easiest class for which we will try to understand what is the information regarding the crust part of the earth. So I will repeat for your understanding. जमीन को जियोलॉजिस्ट्स ने तीन हिस्सों में तकसीम किया है. इंटीरियर ऑफ अर्थ, जमीन के
सरफेस के जब हम नीचे चले जाएंगे, अगर ये ज़मीन की सरफेस है तो इसके नीचे क्या क्या जियोलॉजिस्ट्स ने इमेजिन किया है। एक पहले क्रस्ट और उसके बाद मेंटल पार्ट और उसके बाद कोर पार्ट, 3 हिस्सों में। आज हम क्रस्ट पार्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रस्ट पार्ट में कौन कौन क्या क्या इंफॉर्मेशन है। टॉप मोस्ट, पहले हम इस तरह इसको जहनशीन करेंगे कि टॉप मोस्ट लेयर जो हमारी अर्थ का है वो है क्रस्ट। और क्रस्ट किस जगह खत्म हो जाता है उस जगह को हम मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, किसी जगह पे 30 किलोमीटर, किसी जगह पे 40, 50, 51 या 60, बहुत सारे डिफरेंसेस है लेयर में। फाइनली हम रेंज देते हैं कि 30 से 80 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक अगर हम नीचे चले जाएंगे तो 80 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट पार्ट होगा कॉन्टिनेंटल एरियाज में नीचे तक, जहां पे हमें स्लाइटली लेस डेंस रॉक्स मिलेंगे जैसे ग्रेनाइट है। इसी तरह से अगर अगर ओशंस में जाएंगे, पहले तो ओशंस की डेप्थ उसको हम कवर करेंगे। बाद में अगर हम 10 किलोमीटर कहीं कहीं पे जाएंगे, beneath the oceans the thickness of the earth's crust part is 10 kilometers. So जो ये ओशंस के नीचे हमें रॉक्स होंगे क्रस्ट पार्ट में, वो बेसाल्ट, डायाबेस और गैब्रो टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें मिलेंगे। एवरेज थिकनेस अगर हम जमीन की मालूम करने की कोशिश करेंगे तो वो 33 किलोमीटर है। क्रस्ट को जियोलॉजिस्ट्स ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट, और अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट को बीच में बॉर्डर अलग करने वाली बॉर्डर को हम कॉनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजिस्ट्स ने इसको कॉनॉर्ड नाम रखा है बीच में, ताकि जो कैरेक्टर्स बिलो लेयर यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते जुलते हैं। अपर क्रस्ट है लो डेंस, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, और इनके रॉक्स का जो कैरेक्टर है वो ग्रेनाइटिक कैरेक्टर है, और जो मोस्टली जो रॉक्स अपर क्रस्ट में है वो दोज आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड अल्युमिनियम। जब हम बात करेंगे लोअर क्रस्ट की तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 3.0, और जो रॉक्स होंगे लोअर क्रस्ट के वो ज्यादातर बेसाल्टिक इन कैरेक्टर होंगे, और जो बाकी मिनरल्स रॉक्स, जो दोज रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम। सो दिस वाज a little bit information, or we can say an information regarding the crust part of earth which we get in this class. So in next classes we will try to understand the mantle information regarding the mantle and core part of the earth in the topic interior of the earth. So this was regarding the only for the crust part of the earth.